A very warm greetings of the day. Welcome back. Today's video is related to the back of the leg. In the previous video, I've completed about the origin, insertion, and the nerve supply of the muscles of the back of the leg. Revising the muscles once again, as I stated earlier also, that the muscles of the back of the leg are divided into two compartments. That is the superficial compartment and the deep compartment. Superficial compartment has three muscles, that is the gastrocnemius, soleus, and the plantaris, whereas the deep has the popliteus, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, and the tibialis posterior. Now, talking about this chapter back of the leg, we have two important LAQs and one important SAQ over here. जनरली इतना ज्यादा इस चैप्टर से नहीं पूछ जाते सवाल, लेकिन हमें फिर भी अपने प्रिपरेशन में ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, टिबियल नर्व और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम तो इंक्लूड करना ही है. सो अगर हम बात करेंगे हमारे बैक ऑफ द लेग की, तो यहाँ पे अगर मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं तो इस एक डायग्राम से जो है वो आपको हर एक चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. अगर हम देखेंगे ये हमारा मीडियल मैलुलस है. मीडियल मैलुलस एज यू नो मीडियल साइड, तो इट इज फॉर्म बाय द टिबिया, वेराज ये हमारा कैल्केनियम बोन है. तो ये एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मीडियल मैलुलस टू द कैल्केनियस इज आवर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. बैक ऑफ द लेग इज आवर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. इसलिए आपने देखा होगा कि जो मसल्स की एक्शन है वो जनरली फ्लेक्शन है. तो अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स अंडर दी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, टिबियल नर्व है, और यहाँ पे एक टार्सल टनल फॉर्म हुआ है. इस टार्सल टनल से रिलेटेड जो कॉलेजेस में है वो जनरली टार्सल टनल सिंड्रोम बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है. ठीक है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा दैट इज आवर टार्सल टनल सिंड्रोम. ओके, नाउ स्टार्टिंग ऑन विद आवर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इफ यू सी, तो जो हमारा डीप फेशिया है, that is you can see that the posterior compartment of the leg is supported and subdivided by the deep fascia. The deep fascia supports and subdivides the posterior compartment of the leg. It is thin above but thick near the ankle, where this deep fascia forms our flexor retinaculum and the superior peroneal retinaculum. जो हमारा deep fascia है, that is thin above and thick near the ankle, where it forms the flexor retinaculum and the superior peroneal retinaculum. Posterior compartment is divided into the superficial, middle and the deep part by the superficial and the deep transverse facial septa. Previous videos में मैंने इसका already diagram दिखाया है, ये तो बस वापस एक बार revision है. Now talking about the flexor retinaculum of the foot, if we see the flexor retinaculum, you can see that the flexor retinaculum actually extends. It is, you can write it as a 2.5 centimeter broad band. It is formed by the deep fascia on the medial side of the ankle that holds the flexor tendons. मैंने पहले ही बोला था retinaculum यानी कि it retains tendon in place, तो इसलिए उसको retinaculum कहते हैं. retinaculum because it retains tendons in place. मीडियल साइड ऑफ द लेग पे है, तो ये हमारे फ्लेक्सर टेंडेंस को जो है वो अपने पोजीशन में होल्ड करता है. और ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके अटैचमेंट्स की, सो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द डायग्राम that here it is attached to the medial malleolus, whereas posteriorly and laterally, anteriorly it is attached to the medial malleolus, whereas posteriorly and laterally it is attached to the medial tubercle of the calcaneum. This is our calcaneum bone. मैंने पहले भी बोला है, अगर तुम बस कैल्केनियम लिखोगे और बस मीडियल मैलोलस लिखोगे फिर भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, बट इफ यू आर स्पेसिफाइंग दैट इट इज अटैच्ड टू द मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड. नाउ talking about the structures passing deep to the retinaculum, there is a famous mnemonic that is the talented doctors are never hungry. तो इसी mnemonic से जो है वो structures passing under the retinaculum हो जाता है, are never hungry. Actually, they are hungry, but then too. Mnemonic at talented doctors are never hungry. So if you see the mnemonic, it states as the tendon of the tibialis posterior, flexor digitorum longus, posterior tibial artery, tibial nerve, and the tendon of the flexor hallucis longus. Generally, हमें जो structures passing deep to the flexor retinaculum and the extensor retinaculum है, ये तो अच्छे से याद होने ही चाहिए.
एंड वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन होता है ये दोनों का मैंने निमोनिक शेयर कर दिया, तो उससे आप याद रख सकते हो। तो क्विक रिविजन, 2.5 centimeter broad band of the deep fascia that holds the flexor tendon in position. Attachment posterior border the tip of the medial malleolus, posterior and laterally to the medial tubercle of the calcaneum. This is the line diagram. यहाँ पे हमारा calcaneum, ये medial malleolus, जैसे मैंने पहले भी बोला है, deep fascia है, फिर tendon green कलर से, टेंडन ग्रीन कलर से, नर्व येलो, और आर्टरी जो है वो हमारी ऑरेंज कलर से। दिस वाज द क्लिनिकल केस आई वाज टॉकिंग अबाउट, टार्सल टनल सिंड्रोम। नाउ इफ यू सी इन दिस सिंड्रोम द टिबियल नर्व कैन गेट इंजर्ड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, वाइवा क्वेश्चन है ये, प्लस थियोरी में भी अनएक्सपेक्टेडली पूछा जाता है ये, ठीक है। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ये आएगा, लेकिन ये प्रिपेयर करके जाना। देयर इज अ टार्सल टनल सिंड्रोम. So talking about the tarsal tunnel syndrome, if we see in the syndrome, the tibial nerve can be injured. Okay, so what can be the reasons for the injury of the tibial nerve? First of all, in the upper part of the calf by the fracture of the tibia, in the lower part from the tight plasters, या फिर under the flexor retinaculum because of the compression. Okay. सो ये एक और डायग्राम है, सेम डायग्राम, सेम का लाइन डायग्राम मैंने ऊपर दिखाया था, ये और भी ज्यादा इसके नेमिंग्स के साथ है। यू कैन इवन ड्रॉ दिस डायग्राम, आई हैव एक्सप्लेन दिस डायग्राम प्रीवियसली ऑल्सो, कि स्ट्रक्चर्स पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये हमारा टेलर्स बोन, मीडियल मेलुलस, लैटरल मेलुलस, और फिर यहाँ से सारे टेंडन्स जो है वो सब। ओके, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड्स, वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ पोस्टीरियर tibial artery. We are done with the flexor retinaculum. Two more topics, that is the posterior tibial artery and the tibial nerve. So our tibial nerve also, I have completed the entire tibial nerve in the back of the thigh itself, because there it was given at the continuation in the leg. So we have completed there only. So only one topic is remaining, that is the posterior tibial artery. I will like to bring to your notice that I have already explained you about the soleus and the viva question related to it. Once again, I will repeat it, that it is the peripheral heart. Because of the compression property of the soleus, it can pump up the blood. Okay. Now, talking about the posterior tibial artery, if we see the posterior tibial artery, you can very well see that now you know that the posterior tibial artery is the terminal branch of the popliteal artery. So here is our popliteus muscle. So the posterior tibial artery actually begins at the you can see this is the anterior tibial artery and this is the posterior tibial artery. Begins at the lower border of the popliteus muscle, in between the tibia and the fibula bone. In between the tibia and the fibula bone. Now this passes deep to the gastrocnemius muscle. This is our soleus muscle. This posterior tibial artery, there is a continuation, is a terminal branch of the popliteal artery. It begins at the lower border of the popliteus. Now in the leg, if we see, it runs slightly downwards. In the leg, it runs slightly downwards. And it runs in between the two malleoli, in between the medial malleoli and the medial tubercle of the calcaneum. So here is our calcaneum one, and here is our medial malleoli. It slightly runs downwards in between and reaches up to the medial malleoli in between the medial tubercle of the calcaneum. It terminates deep to the flexor retinaculum. For the termination, it terminates deep to the flexor retinaculum by dividing into the medial and the lateral plantar arteries. Medial and the lateral plantar arteries. यहाँ पे डायग्राम में गड़बड़ है. This is not nerve, this is artery. This is artery. Okay. Now आर्टरी है तो इसके रिलेशंस भी होंगे. तो टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस इन दी, क्या मेरे पास एक और कोई डायग्राम है रिलेशंस का? नहीं. ओके, फिर बात रिलेशंस की बात करेंगे. इन द अपर पार्ट ऑफ द लेग इट लाइज डीप टू द गैस्ट्रोनीमियस एंड द सोलियस मसल. ओके, सोलियस मसल के डीप रहता है ये. इन द लोअर पार्ट इट इज कवर्ड बाय द स्किन एंड द फेशिया, whereas in the ankle it lies deep to the flexor retinaculum. So यहाँ पे मैंने इसमें तो लिखा ही है. Superficial relations in the upper part of the leg, it lies deep to the soleus and the gastrocnemius. In the lower leg, covered by the skin and the fascia, whereas at the ankle lies deep to the flexor retinaculum. Deep relations, if we talk about, in the upper part, it lies on the tibialis posterior. मैंने इसके वक्त बताया था मसल्स के वक्त कि जो हमारा tibialis posterior होता है कि it lies upon the tibialis posterior muscle के ऊपर जो artery हो गया, that is our posterior tibial artery. In the lower part on the flexor digitorum longus, and at the ankle on the capsule of the ankle joint between the flexor digitorum longus and the flexor digitorum
hallucis. Flexor hallucis longus. Now, talking about the branches of the posterior tibial artery, it gives a peroneal artery, nutrient artery to tibia, and some anastomic branches. Anastomic branches कौन से है? The first is circumflex fibular branch, communicating branch, calcaneal branch, and the mellular branch. अगर ब्रांचेस लिख रहे हो तो ये 3 हेडिंग के अंदर लिखना, ऐसे रैंडमली मत लिखना कि पेरोनियल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस, कैल्केनियल आर्टरी. नो, राइट पेरोनियल आर्टरी, then write the nutrient artery to tibia, and in the anastomic branches you have to write the circumflex fibular branch which winds around the neck of the fibula, then the communicating branch, calcaneal branch, and the mellular branch. So इसके बाद tibial nerve already हो चुका है. So this was entirely about the chapter of the back of the leg, in which we have completed into the two parts. The first part includes the muscles of the back of the leg, whereas in the second part we have completed the posterior tibial artery. टिबियल नर्व जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और वहां पे मैंने क्लॉइंग ऑफ टोस और वो प्लांटार टिबियल नर्व से रिलेटेड मैंने क्लिनिकल कराया था. So I hope you have understood this chapter. If any doubt, please feel free to ask me. You can directly DM me on the Instagram, या फिर you can put your doubts in the comment section. I will surely reply to it. Thank you.